हे गाइस, वेलकम टू एसी वालाला। सो आज का जो एपिसोड है ये प्रॉबेबली लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसमें एसगार्ड की जो स्टोरी की एंडिंग है वो हम कवर करेंगे एंड अगर टाइम बचा तो गनर की जो वेडिंग है, सेटलमेंट में एक वेडिंग होने वाली है, वो भी कवर करेंगे। अदर देन दैट या एक बड़ा सा ब्रेक होगा इसी वालाला के लिए, क्योंकि इसका डीएलसी आने में अभी 2.5-3 मंथ्स बचा हुआ है, तो तभी हम इसके बाद हम इसे खेलेंगे। एंड अदर देन दैट आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी इन्वेंट्री में मैंने म्योनियर थॉर का हैमर जाके नॉर्वे से उठा लिया है। एंड इसे उठाने के लिए हमें पूरा थॉर आर्मर सेट चाहिए होता है, जो आपको ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट के सबको मारने के बाद ही मिलेगा। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो पता ही है, किंग एल्फ्रेड फाइनल मेंबर है ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट का, जिसे आप स्टोरी लाइन में मारते हो एकदम एंडिंग में। तो इसे जल्दी लेने का ये हैमर को कोई तरीका नहीं है, ये एकदम एंडिंग ही आइटम है। तो इसको ज़्यादा यूज़ करना है तो फिर अभी हम इसे डीएलसी में यूज़ कर पाएंगे। अभी हम एसगार्ड मिशन में ऑब्वियसली इसे यूज़ करेंगे। तो अभी जाते हैं वालका के हट में एंड एसगार्ड में चलते हैं। ये पीने से हम योटनाइम में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो एसगार्ड में चलते हैं। बाकी जो एंडिंग है एवॉर की एंडिंग, वो तो 2 एपिसोड पहले हम कर चुके हैं। एंड पिछले एपिसोड में इंग्लैंड की एंडिंग हुई थी, जिसमें हमने सारे आउट ऑफ द एंशिएंट्स को भी मार दिया था एंड इंग्लैंड में भी हर एक एरिया हमने एक्सप्लोर करके सबको एलाइज बना लिया था। तो वो एपिसोड आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो आप जाके देख सकते हो। के पहुंच चुके हैं एसगार्ड हिमडल्स टावर। ये हमारा ब्लैक स्मिथ है। The Nornir told me you'd be here. The cord is forged. Gleipnir, I call it. I'll wager there's a good story behind that wound. A tale for another time. Thank you for this. When you bind the beast, spare no loose ends. The cord will stretch or shrink to fit your needs. How tightly will it hold? The beast may resist. The more you tighten the cord, the stronger it will hold and the greater it will hurt, till the beast is rooted to the ground. Thank you, Ivaldi. You may go. You mean from Asgard, do you not? My debt to you is paid in full? Yes, as promised. Thank you, Harvey. I did not expect you to remember. Where will you go next? Under the mountains of Svartalfheim. Our mountains. To free the Earth's riches. For this is what I know best. ओके बढ़िया। तो हमने ये डॉर्फ को बोला था हमारे ब्लैकस्मिथ को कि वो अगर ये ऑल्ट बना के देगा तो हम उसे छोड़ देंगे, हाँ सर्विस से फ्री कर देंगे। तो वही हुआ है। बाकी कॉर्ड जो है अभी दिख नहीं रहा, अंदर रख दिया है। काफ़ी वंडर वुमन के कॉर्ड की तरह है, जितना ज़्यादा रेजिस्ट करोगे उतना ज़्यादा टाइट होते रहेगा। ओके, तो अभी हमें टीएल से जाके मिलना है, जो कि हाँ जाने का कोई तरीका नहीं है, फास्ट ट्रैवल भी नहीं है। चलते ही यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करते हैं एंड ट्राई करते हैं उसे यहाँ से जाने का। तो वो जो आइलैंड दिख रहा था अभी जहाँ पे हमें मिशन करने जाना है, तो उधर ही फेंड्रियर को हमने टीयर के साथ भेजा है। टीयर वही गॉड है जिसका रीइंकार्नेशन सिगर्ड है एंड हम ओडिन के रीइंकार्नेशन में ऑब्वियसली, एंड बैसेम लोकी का रीइंकार्नेशन था। ये रहा। Harvey, you're a balm to my eyes. What happened to yours? A sacrifice for something greater. Is the wolf nearby? Yes, but he's grown. I have kept him company, but he's consumed by a sadness I cannot understand. Regrettable but necessary. I knew from the start this wolf brought ill tidings. From the start it was a kind creature. But our mistrust and cruelty have robbed the poor wolf of its sweetness and life. Would it be a kindness to kill it then? We are past the time for such mercy. This wolf has power now that would test our strengths combined.
I fear he is possessed of a power that renders him ever living. Then we will offer him a different fate. This cord is unbreakable. You must convince him to wear it. It will act as a leash, whose magic will signal that he is safely secured. An assurance to the Aesir who fear him. A beacon, that is all. No harm will befall the poor Fenrir. Okay. Fenrir, yes. You know the creature's name. Did Loki tell you? He did. It is a fine name. Yes. Dweller of the Fens. An apt name for his current fate. तो हम फेंड्रिर के पास जा रहे हैं जो कि ओडिन का मेन एनिमी है नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से. Leave me. I wish you well, Great Wolf. But a fear still hangs over Asgard. The Aesir worry about your growing size and strength. काफी ज्यादा बड़ा हो गया ये. Play now. लॉल. And what do they have to be afraid of? Old friend. Havi brings a collar fashioned by the dwarves. A beacon that we may track from a distance to know where you roam. Wear this, and you may live and thrive in Asgard without worry. I smell something sour. Wear the collar! Or return to Jotunheimer. There's no third way. Son of Loki. Have I not treated you with kindness? We are bonded, you and I. And as I trust my king, so you may trust me. लेकिन ओडिन ने से झूठ बोला है. वो बीकन नहीं है जो है ये से बांधने के लिए. As a pledge of faith, you may take my hand if I am untrue. Okay. Be swift, Havi. Burns. Havi, Nice. unbind him! Okay. Here you stay, Fen Dweller! अच्छा इसका हाथ कट गया. ओके. सिगड़ का भी हाथ कट जाता है प्रेजेंट टाइम में. ओके. तो इसीलिए सिगड़ इसका रीइंकार्नेशन था इसलिए उसका भी हाथ कट जाता है. हमें Deceiver. बांधना पड़ेगा वो पूरा. ओ fuck. ओके. उसके चारों पैर पे मारना पड़ेगा. पड़ क्यों नहीं रही है? Brothers will fight one another. Kill. किधर गया? You ओ speak in riddles. The home of the gods turns red. सो डैमेज ही नहीं हो रहा है. अब हो रहा है.
वो हमारी लाइफ। हो गया बाइंड। It would be an age of storms, an age of war. Where did you hear these words of prophecy? ओके, ये अंदर भाग गया, बच गए। वापस आ रहे। इसको डैमेज क्यों नहीं हो रहा है? ओ, ये क्या है? टोर्नाडो बना दिया। अरे 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 अरे, वापस भाग रहा है। शिट 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 शिट, बच गए। इसको डैमेज हो नहीं रहा है, शायद इसके वो वीक पॉइंट्स भी मारते रहना पड़ेगा। शिट, एरोज खत्म होने वाले हैं। बढ़िया, पूरा बांध दिया है ऑलमोस्ट। Then comes the second great soul, when the Havi goes to fight the wolf. How do you know these things? This is the tale I tell myself each night in the cold and dark before I sleep. ये पत्थर फेंक के मार रहे हैं हम पे। वो बच गए। अब शायद इसकी लाइफ खत्म करनी है। हाँ, अब लाइफ जा रही है, बढ़िया। अब भाग गया।
अंदर चले गए यार। ये कितने बार भाग जाता है? बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ज़्यादा लाइफ बची नहीं है उसकी। वो बच गए। शिट हम टॉर्नेडो के अंदर फंस गए थे शायद। हो गया, नाइस, खत्म है। बस अभी सिनेमैटिक क्लिप बचा होगा, इसे पूरा बांध देगा। हाँ, बांध दिए पैर। ओके, बढ़िया, अच्छा बॉस फाइट था। ये अचानक से देखो पूरा लाल लाल हो गया पूरा एरिया। स्पीक टू टीएल। इसको तो हमने धोखा दे, इसको भी उल्लू बना के आए थे ना, बोल के कि ये बीकन बांधना है उस पे I करके। could not strike the killing blow. All my oaths remain unbroken. Anyone lesser would have succumbed to his hatred. उसका हाथ ठीक If भी I हो could have गया। done this any other way, उसका देखो जख्म मतलब भर के हील हो गया हाथ There was जैसे no कटा। other way, Harvey. Our fates are fixed. fate, I know. You made a great sacrifice on my behalf. It was not for you. Do not think your kindness has made you a new friend, Lord of Imbeciles. I will kill you, all of you, gorging on Aesir flesh. You may strike the final blow, son of Loki, but I will savor my years of freedom before we meet again. Come, old friend. The healing hands of Freya can help you. ओके, लोकी कहीं नहीं दिखा। उसको योटनाइम में हमने हराया था, लोकी का एक बॉस फाइट था, उसके बाद कहीं पे दिखा ही नहीं। Have you come to say what I fear? Not to say. But to show. A vision of the times to come. None living or dead now equal our heavy in arrogance. To believe that you could remake your fate thus. For all your efforts, for all your struggles, the threads of fate still bind you as tightly as ever. And yet, from this pattern, a single strand escapes the fray and stubbornly clings to the weave. Æsir, Vanir, your doom will come. The earth will shake, the sun will die. Jötnar will stalk your streets as fire rains upon your heads. And the great wolf Fenrir will feast upon your blood. But you have found a way to live beyond this terror. Let it flow. To cheat your death. From the life tree we go, to the life tree we shall one day return. Mind and spirit will surge to a time far beyond your own. To a time in which you shall be reborn. None may follow. Loki least of all. It is done. Time to face our end. ओहो, नाइस सीन। मैं बताता हूँ वो सीन में क्या बताया उन्होंने, जिन लोग को समझा नहीं आप में से। तो वो जो लाइफ ट्री था वो एक्चुअली में वही मशीन है जो हमने अभी प्रेजेंट में
जो एवोर और सिगर्ड जाते हैं नॉर्वे में और एक मशीन के अंदर जाते हैं ना, जो वालाला उन्हें लेके आते हैं, तो वही मशीन था लाइफ ट्री। तो क्योंकि रैग्नारॉक को ये लोग रोक नहीं सकते, ये लोग अपने बॉडी और इनके कॉन्शियसनेस को लाइफ ट्री में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये बनाने के लिए हम योटनाइम गए थे, जो मैजिक था, और इसके लिए ओडिन ने अपनी एक आंख सेक्रीफाइस की थी, मतलब गेम में ऐसा दिखाया है। तो ये जो वो मैजिक यूज करके खुद को ट्रांसफर कर लेते हैं लाइफ ट्री के अंदर, जो टीएल, ओडिन ये सब, और ये लोग रीइनकार्नेट होके एवो और सिगर्ड ये सब बनते हैं। लोकी को इन्होंने वो पावर दी नहीं थी, बट पता नहीं लोकी कैसे, तो भी वो भी खुद को ट्रांसफर कर लेता है छुप छुप के लाइफ ट्री के अंदर। तो इसलिए लोकी बैसिम बना, टीयर सिगर्ड बना, और ओडिन एवोर बन के ये लोग रीइनकार्नेट हुए थे। This was not my day to die. बट एवोर फाइनली ओडिन को डिनाई करता है, जैसा कि हमने उसके एवोर एंड वाले एपिसोड में देखा था। बट बैसिम लोकी को डिनाई नहीं कर पाता है, लोकी उस पर हावी हो जाता है, इसलिए बैसिम पागल होके हम पे हमला कर देता है। ओके, तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है एसगार्ड का सारा मिशन। एक बार देखते हैं। एसगार्ड पे कोई मिशन नहीं बचा, अब बस ये साइड मिशंस और ये सब बचे हुए जो इतने कुछ काम के नहीं है। तो हम वापस उठते हैं एंड गनर की वेडिंग का एक छोटा सा मिशन है सेटलमेंट में, वो भी यही एपिसोड में पैचअप करके पूरा असैसिन क्रीड क्लोज करते हैं। अदर देन दैट एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये पता चली है कि प्रेजेंट में एनिमस के बाहर जहाँ पे एवोर की स्केल्टन्स है, जिससे वो लोग डीएनए यूज़ करके इसकी मेमोरीज निकाल रहे हैं, वो एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि विनलैंड है। तो विनलैंड जो इसमें हमने दिखा था, हम जहाँ पे ट्रैवल करके गए थे ग्रोम क्योटवेसन को मारने के लिए, तो वही एरिया में एवोर का स्केल्टन मिलता है नॉर्थ अमेरिका में। तो पता नहीं वो उधर मरा कि उधर यहाँ पे मरने के बाद उसकी बॉडी उधर लेके गया, ऐसा कुछ होगा, बट वो हमें गेम में कहीं पे बताया नहीं है कि वो उधर कैसे पहुँचा नॉर्थ अमेरिका में या विनलैंड, एक ही चीज़ है दोनों। Eivor, you have awakened. With more to share, I hope. I returned to Asgard. And what did you see? I bound the wolf Fenrir, Loki's son, with an unbreakable cord. The beast was enraged by my actions. We fought and I prevailed, but I could not kill the beast. You visit lore and legend. Things I would never have imagined to be real. Parables, yet here you live them as memories. Every moment there was as tactile and as vital as you and I seated in this hut. This is wonderful. Was there more? There was a betrayal. I betrayed my friend Tyr. I stood by as the great wolf mauled him, tearing his arm off at the joint. I could have said something to prevent it, given him a warning. But I did nothing. How did it feel? I was unmoved by his pain. Not hateful, but I did not regret my indifference. A swig of poison that drinks like wine. Selfishness unmeasured often feels this way. What else did you see? I witnessed a final vision from the Nornir, the coming of Ragnarok. All was fire and ash, a chaos like a foul wind from the depths of Ginnungagap. But we were ready for the coming storm. 8 of us, we drank the mead, then stood and marched to our doom. And that was the end of the Nornir's prophecy. How curious. Was there more? Nothing. I can make sense of no more. I see. The thrust of these visions seem clear to me. As in your first reverie, a fear of betrayal hangs upon you. Odin has seen fit to gift you with his infinite knowledge and the treasure of his experience. Perhaps his tale is a warning. The indifference he felt is a great pity. See that you do not follow this same road. To do so would risk a loneliness, a personal exile, worse than death. I understand.
Oh, I hope I do. Thank you, Valka. ओके बढ़िया। तो इधर हमारा एसगार्ड कंप्लीट हो चुका है, एसगार्ड का स्टोरी मिशन। उसके अलावा इसने बोला कि 8 लोगों ने वो ट्री ऑफ लाइफ में अपना कॉन्शियस ट्रांसफर किया, जैसे कि थॉर भी हमें दिखा था उधर, बट थॉर हमें ये प्रेजेंट डे गेम पे कहीं दिखाई नहीं उसका रीइंकार्नेशन, तो मे बी डीएलसी बट नॉट श्योर। हाँ, अगर आपने कहीं पे फायरफ्लाइज पकड़े तो आप इधर लाके छोड़ सकते हो ये पॉन्ड के ऊपर, तो रात को काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। ऐसी एक सेटलमेंट के लिए एडिशन है वो। तो हम गनर के पास जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमें थॉर का हैमर यूज़ करने का कोई ज़्यादा मौका नहीं मिला। फेनरिर बॉस इतना बड़ा था, वो हैमर से मारने के लिए बहुत पास जाना पड़ता, इसलिए मैंने ये स्पीयर यूज़ किया उसे मारने के लिए। ओके, ये रहा। Between you and me, Eivor, always thought you'd be a good jarl. हम याल बन चुके हैं यहाँ के अभी लीडर। एंड अपग्रेड में अबाउट योर वेडिंग। About you and Bridget. When do you wish to be wed? The sooner I can make her my wife, the happier I will be. But we are fine to wait until everything has settled here. Enough waiting. Cool your forge and cover your anvil. Let's get you married. Wonderful. Shall we gather everyone? Gather your wife and your courage. I will bring the people together. ओके, नाइस। तो ये सेटलमेंट का एक फाइनल सेलिब्रेशन टाइप का रहेगा, इसलिए मुझे लग रहा है उन्होंने ये मिशन सबसे लास्ट में रखा है गेम के भी एंड होने के बाद। उससे पहले ये मिशन हमें मिलता नहीं है। I am honored to stand before you, Gunnar, Bridget, on this bountiful day, to celebrate the strength of your bond and to see you wed. I am in witness of a love that inspires and empowers. I invite you now to speak your vows. To you, my darling Bridget, I offer this blade, forged in flames that burn as brightly as my heart does for you. A blade as sharp as your wit, as glinting as your beauty. May it sing through the air as sweetly as your voice meets my ears. Dio, sé dwi dy'r caru ti Gunnar. Dwi'n efo am lwcus bod I wedi dod o hyd o ti yng nghariad. And I give you my sword and my promise that I will stand at your side forever. Hyd fi wedi breuddwydio am future yn hun, a di so tawalwch yn hope a premonition. Ond dim mount o sgraen a foresight paratoi fi a sweeping adventure meeting ti. Tiw'r enaid fel dim arall, a dyn as strong a bwrdd i ci, ac fel as I ffyr. किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रही है। Such poetry, oh dear. You make me cry, my love. Let us hedfan efo'n gilydd, tro bywyd and beyond. I offer you this ring, and take yours in kind. I will wear it with pride and honor, warmed by the love of so perfect a lady. And I gwisgo fe fel calon, adoration a ffydd am byth. This is the greatest day. इसको समझ रहा है क्या? Embrace me, my love. थोड़ा सा कॉमिक बना है एंडिंग, बट ओके, नाइस। With our couple now bonded in matrimony, now we drink.
ओके तो हम हमारे कैरेक्टर्स से थोड़े बात कर सकते हैं। वाल का इधर खड़ी है हमारे सेटलमेंट के लोगों से। I want to thank you for all you've done for me. My visions have lessened of late, and I find it hard to explain how different I feel. Grounded, unified, at peace. That is good to hear, Eivor. Very good to hear. ओके सीगढ़ से बात करते हैं। It is a strange feeling, brother. Weddings are the beginning of something, but this feels like something of an end. The first happy union in our home. We have matured into something greater. So yes, a beginning and an end, I think. Richard, I gift you a formal welcome to our clan and our family. You are a fine addition to Gunnar's life and to ours. Diolch, Eivor. I couldn't be more happy to bo ma. ओके कुछ नहीं समझा। Well in a case Misha the years. Yes, of course. As I say, it is wonderful to have you. ओके नहीं गनर से बात करते हैं। Gunnar, you old trout. You're a married man. Never thought I would see the day. Nor did I. And not for lack of trying. हो गया उसके ज़्यादा डायलॉग थे नहीं। है था सरक सरक। And how are the marriage customs in your country, Hytham? Something like this? Like this in all the most important ways. There are smiles, cheers, and warm embraces. All that is needed, I think. हैतम के पास भी वैसी ही सॉर्ड है जैसे बैसिम के पास है ना। ऐसे वन हैंडेड सॉर्ड गेम में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं। अच्छे वेपन्स होते हैं वो अवेलेबल होते तो। Alvis, I'm surprised you did not serenade the bride and groom with a verse or two. Oh, I wished to, I did. But all that came to me were insults and jibes. Another time, I think. ये पॉइंट है हमारे क्लैन का। और कौन बचा है? रेडा इधर बैठा हुआ है, इससे बात करते हैं। You've been among us for quite some time, Reda. Are you ready to settle? Make a home here? For a year or two, perhaps. But I am not the settling kind. I am a wanderer, always searching, never finding. Maybe one day. बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये ओरिजिन्स में भी था ये जो। Sunan, guide me. वैसे हम लोग है किधर? अच्छा हमारा सेटलमेंट वो रहा, ये ऊपर एक चट्टान है उसके ऊपर मैरिज सेलिब्रेट कर रही है लोग, मैरिज सेरेमनी। ओके तो रेडा जो है ये एक मर्चेंट है, ये असैसिन क्रीड ओरिजिन्स में भी था आपने खेला तो। ओके ये क्या है इधर? Randvi, saw you looking a little lonely. Thought I might come and join you. How nice. Are you enjoying yourself? I am. I never thought I would see gruff old Gunnar so enraptured by a woman. Enraptured by anything, for that matter. He's a hard one to read, but I am pleased for him, and for this day of rest and respite. After everything, a few days of feasting will do the people some good. They need this. They do. Will you walk with me? Anywhere. Lead on. Something has been on my mind for some time. I am no seer, but I foresaw this day long ago. Not Gunnar's marriage, but our situation. Our success. How do you mean our success? I mean to say that I saw our settlement flourishing, through our victories in war and in diplomacy. And from the day we set out from Norway, I knew that you would make a fitter leader than Sigurd. It was never in his character to lead. It was always within yours. I see. Do you? You might have warned me. You would not have listened. Fair. I do hope you see it now, in all that you have done for us. Randvi, you and the people here have done more for me than I could ever repay. I am honored by your faith in me, and your confidence. As I am honored by your friendship. And I by yours. Eivor, I want you to know that Sigurd and I are... We are severing the bonds of our marriage. Okay, divorce ले रहे हो दोनों। We share a love that is steadfast, and I have faith it will forever be so. But it is not the love of a wife and her husband. It was not an easy decision. But after we talked with honesty, we embraced more warmly than we have in a great while. I think we will be happy.
I hope so. And I am pleased for you. I am pleased for myself. Sigurd's desires are bigger than any man or woman can offer. He longs for something more. And what about you? What are you looking for? I have all I need right here. With you. With our people. ओके एवोर की भी शादी करा देते हैं फिर. I want to say, Randvi, I love you, and I have for some time. I did not pursue it, not wanting to betray my brother's trust. But that does not mean I did not desire it. Does that surprise you? ओके तो ये जो रोमांस ऑप्शन है आपको पहले भी मिल सकता है गेम के स्टार्टिंग में, बट वो फिर एंडिंग चेंज करेगा थोड़ी आपकी. Starved for the affection of her husband, that it was loneliness driving me. But it was you, Eivor. Only you. Everything you are, everything you will become. Randvi, without you I would have lost my way 1,000 times. I never told him outright, but I doubt he will be surprised. I think he may have suspected it even, some time ago. If he suspected it, he never said anything. He is more observant than I often give him credit for. I believe he sees us as we are, and as we hope to be. We can wait to tell him. Give it a few days, when the feasting is over and everything is settled. Agreed. I have waited long enough for you, and you for me. What is another few days? The blink of an eye. ओके नाइस. तो सारे जितने भी मिशन है सब कुछ खत्म हो चुका है. Shall we find our way back to the wedding? Bridget might give another speech. We must not miss that. About that, I have not understood a single word of hers since Gloucestershire. Really? I find she speaks beautifully. With poetry, even. Kidding? Am I? लॉल. ब्रिजेट वही है गनर की वाइफ जो अजीब सा लैंग्वेज बोलती है वही. ओके नाइस नाइस वन. तो गाइस ये था असैसिन क्रीड वाला. सारे मिशन हमने कंप्लीट कर लिए, सारे ऑर्डर ऑफ द एंशियंट्स को मार दिया, एसगार्ड का भी मिशन कंप्लीट कर दिया. एंड टेक्निकली अभी कुछ बचा नहीं करने के लिए अनलेस डीएलसी आता है. तो डीएलसी जब भी आएगा वो हम ज़रूर खेलेंगे. एंड अगर मैं इस रिव्यू के बारे में बताऊँ तो अगर आपको असैसिन क्रीड ओडिसी और ओरिजिन्स अच्छा लगा तो डेफिनेटली ये उसके एक स्टेप ऊपर है, आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा. आपको आरपीजी गेम्स अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगेगा. अगर आपको ऐसे गेम्स अच्छे लगते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है फॉर द प्राइस यू पे तो आपको ये अच्छा लगेगा. अगर आपको आरपीजी गेम्स अच्छे नहीं लगते, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम्स अच्छे लगते जो लीनियर स्टोरी वाले हैं, या फिर आप पुराने असैसिन क्रीड जैसे इजियो अल्टियर वगैरह वाले असैसिन क्रीड 1, 2, 3 वगैरह के फैन हो तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा. तो उस हिसाब से आप ये गेम परचेज कर सकते हैं. एपिक पे सेल पे ये गेम 1750 का मिला था जो दिसंबर में सेल हुआ था. अभी और नया सेल आएगा तो हो सकता है और सस्ते में मिले. तो या मेरे हिसाब से तो मुझे आरपीजी गेम्स बहुत पसंद है, इसलिए मेरे हिसाब से इसे फुल थम्स अप है. आप इसे ले सकते हो, परचेज करके खेल सकते हो. बस अब आपको जज करना है आपके टेस्ट के हिसाब से. अदर दैन दैट आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम और भी नए गेम्स खेलने वाले. वेयरवुल्फ अपोकैलिप्स का गेम प्ले जल्दी आने वाले चैनल पे और नियो 2 का भी आने वाला है. ओके देन सी यू गाइज इन अ न्यू गेम इन अ न्यू एपिसोड. बाय.